लेके अंत तक पिता आप उसकी हमारी सहायता मदद करना हर एक चीज़ों में पिता परमेश्वर। बाकी का सारा समय और आदर और महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमेन। क्या हम सब से आमेन बोल सकते हैं? आमेन आमेन। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी लोग जोर का बोल सकते हैं। बोलो आमेन। वेरी नाइस, अच्छा लगा सुन के। तो क्या मुझे कितने लोग बता सकते हैं, हम इतने सारे लोग में से आई एम श्योर कि काफी लोगों को पता होगा कि क्रिसमस क्या है। जिसे भी पता है हम हाथ उठा के हाँ आप बोल सकते हो। आप बोलना चाहोगे? नहीं? ओके। मैं बस एक बहुत साधारण सवाल पूछ रही हूँ। बस मुझे जानना है कि क्रिसमस क्या है, क्यों हम मनाते हैं क्रिसमस। किसी को पता है? हमने क्रिसमस शब्द सुना होगा, सुना है? हाँ ना? हाँ तो जोर से हाँ बोलो, ना तो जोर। सुना है, सुना है। तो अभी मैं पास्टर रॉय जॉर्ज को बुलाना चाहूंगी, जो हमें गहराई में बताएंगे कि हम यहाँ पर आज क्यों जुड़े हैं, हमारा मकसद क्या है इस प्रोग्राम को रखने का, और क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं। इसके लिए आइए हम जोर से तालियों के साथ पास्टर रॉय जॉर्ज का स्वागत करें। Praise the Lord. सभी को प्रभु की स्तुति हो। Greetings you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is coming soon. परमेश्वर के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं, जो परमेश्वर जल्दी आने वाला है। I really thankful to the Lord Almighty that such a function is happening here today. Actually, it's arranged by our dear brother Benijan and family. मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो हमने रखा है, और हमारे डियर ब्रदर जो है बेनी, उनके द्वारा। Yeah. So the kindness and the Benijan have such a kindness, such a desire to every year is conducting such a program here on behalf of Perumana Constructions. जो ब्रदर बेनी का हृदय है, इतना नम्र हृदय कि हर साल हम ये प्रोग्राम को करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे हम सभी लोग एकत्र होकर यहाँ पे जुड़ते हैं। At the same time, I really thankful to the Anna Moll. She is the anchor of today's program, actually. और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे लिए कि मैं आप लोगों के बीच में अनुवाद कर रही हूँ। Yeah, Anna Moll said one thing. I really it's interested for me that very those who are sitting close to your beside tell them that सुंदर है, आप सुंदर है. It means you are so beautiful. So उन्हें बहुत अच्छा लगा कि जब हमने कहा कि आप आपके पड़ोसी में जो बैठे हैं उनको देखकर बोलो कि आप सुंदर लग रहे हो। Actually, that is the secret of the day of Christmas. और ये एक एक्चुअल सीक्रेट है इस क्रिसमस दिन का। The importance of Christmas, actually, we are understanding that the birth of Jesus. और जो महत्व चीज हम क्रिसमस के बारे में जानना चाहेंगे तो वो है परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म। Jesus born in the city called Bethlehem. यीशु मसीह का जन्म एक शहर में हुआ जहाँ जिसका नाम है बेथलेहेम। While we are studying the scripture portions, while we are studying the Bible, we can understand that Bethlehem is considered as the small city. It's a small city. जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि जो बेथलेहेम है वो एक बहुत ही छोटा जगह है, छोटा नगर है। But in that small city is prepared for the birth of the great King Jesus Christ. लेकिन वही जो छोटा शहर है वो बनाया गया था एक हमारे यीशु मसीह के लिए, जो सब राजाओं के राजा है। So today we are gathered here in the presence of the Lord Almighty. We can understand that the birth of Jesus, actually it's a small city. Bethlehem is called is a small city, but the Jesus born in that small city, it means that actually I am translating like that. We all are humble in the presence of the Lord. When we are humble in the presence of the Lord Almighty, Jesus, the King of Kings, will come inside us, and we are
celebrating that blessings of Jesus Christ. जब हम अपने आप को नम्र बनाएंगे तभी यीशु मसीह जो है हमारे राजाओं की राजा, वो हमारे हृदय में आके हमारे हृदय में कार्य करेंगे। So anybody is here still not received Jesus as your personal savior, today is the opportunity, today is the right time to receive you Jesus as your personal savior. तो अगर यहाँ हम में से कोई लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा है, तो आज आपके लिए ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही दिन है जहाँ पे आप यीशु मसीह को अपना सके। Because in Psalms 85:7 we are reading that, show us your mercy, O Lord, and grant us your salvation. जैसे भजन संहिता उसके एक अध्याय में ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह आपके मर्सी को हमारे पर उंडेले। Yeah. So if you are receiving, when we are receiving Jesus Christ as our personal savior, we are getting the salvation from the Almighty God. जब हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं तो हमें परमेश्वर उसके पूरे रीति से और पूरे हृदय से हमें स्वीकारता है। Yeah, God bless you everyone. I pray for the upcoming programs conducting here. So everyone should pray for the blessings of the upcoming programs. We are listening the music. Everything will be a blessing today. May Lord bless all of you in this words. So सभी को परमेश्वर आशीषित करे और मैं आगे के प्रोग्राम के लिए मांगता हूँ कि अच्छे से जाए और हम सब ये दुआ करेंगे कि यीशु मसीह इस समय हमारे बीच में है। तो आइए हम प्रोग्राम के आगे की ओर चलें। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर रॉय। और कितने लोगों को समझा कि क्रिसमस क्या है? अभी समझा? यीशु मसीह का जन्म जो एक छोटी सी शहर में जन्म लिया और इतना राजाओं के राजा जो बेटा बना, है ना? तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग बहुत ही खुश नसीब है कि परमेश्वर ने हमें चुना, हमें इस धरती पर लाया। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम खुश हैं, हमारे पास परिवार है, हमारे पास हाथ पैर आँख सब कुछ है जिस वजह से हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं। और उसी रीति में मैं इस समय ब्रदर जॉन एंड टीम को बुलाना चाहूँगी जो हमें स्तुति की ओर लेके जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, हम बहुत खुश नसीब है, हमारे पास हाथ है, पैर है, आँख है, मुंह है बोलने के लिए। तो क्यों ना हम उसी चीज़ों को यूज़ करके उस परमेश्वर का स्तुति करें। जैसे वो स्टेज पे आएंगे, वो कुछ संगीत को गाएंगे, मैं चाहती हूँ कि हम सब खड़े होंगे और हम ताली बजा सकते हैं। भले हमें अक्षर या शब्द नहीं आएंगे गाने के लिए, पर मेरा विश्वास है कि हम अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। ओके, ओवर। तेरे जैसा है कोई नहीं, चुके आसमान और नदीमा गाए सखी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों झुके आसमान
हे प्रभु हमारा हम गाए वो राजा राजा तेरी महिमा होवे तूने प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए हो सदा तू राजा होगा हे राजा तेरी महिमा होवे प्रभु हमारा खुदा हम गाएंगे सदा तू राजा होगा हे राजा तेरी महिमा होवे सदा होवे प्रभु हमारा खुदा हम गाएंगे सदा तू राजा होगा हे राजा तेरी महिमा होवे सदा होवे प्रभु हमारा खुदा प्रभु हमारा खुदा Jesus, hallelujah. यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा करुण भलाई तेरी सब रहेंगे मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं मैं हाथ गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा मैं हाथ गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा
Praise. Praise the Lord. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. Praise the Lord. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಇರಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. Praise the Lord. ಈ ಸಂತೋಷ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಜನ್ಮದಿನ ಆಘೋಷದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్య ಎಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮಗೂ ಹಾಡಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸೋಣ. Praise the Lord. ಪ್ರೀತಿಸಲು ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్య ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸರನಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్య ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸರನಗಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರವೇಸಯ್ಯ 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 ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్ಯ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸನರಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్ಯ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸನರಗಯ್ಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜೀವನು ನನಗೆ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾಶದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಸಿ ಅವರು ನೀನೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಜೀವನ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವೆ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜೀವನು ನನಗೆ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವರು ನೀನೆ ಸಂಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಹೃದಯದವರ ಹೊರತಿದೆ యేసయ్ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಹೃದಯದವರ ಹೊರತಿದೆ యేసయ్ಯ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్ಯ ಮಹಿಮೆ యేసయ్ಯ ಸ್ತೋತ್ರ యేಸయ్ಯ ಮಹಿಮೆ యేಸయ్ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్ಯ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸನರಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్ಯ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸನರಗಯ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿವೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿವೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಯ
ಎತ್ತು ಮಂಡಿಸಲು ಹೃದಯ ತವಕ ಬರುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಹೃದಯ ತವಕ ಬರುತ್ತಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్యా మహిమే యేసయ్యా స్తోತ್ರ యేసయ్యా మహిమే యేసయ్యా ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్యಾ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్ಯಾ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్యಾ ಮಹಿಮೆ యేಸయ్ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರ యేಸయ్ಯಾ ಮಹಿಮೆ యేಸయ్ಯಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేಸయ్ಯಾ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేಸయ్ಯಾ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ Can I have the guitar?
கரவிலே மிதந்திடும் அழகு நான் कितने लोगों को अच्छा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? क्या बात है। क्या हम जोरदार तालियां बजा सकते हैं उनके लिए जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पर परमेश्वर के गीतों को गाया? जोरदार। आप लोग इतना मेहनत करते हो, आपके हाथ तो एकदम कड़क हो गया। जोर से ताली बजाओ, जोर से। जब तक मैं बोलती हूँ रुको मत। क्या बात। अब खुद के लिए ताली बजाओ, खुद के लिए ताली बजाओ। क्या बात है। हम एक स्पेशल सॉन्ग परफॉर्मेंस है हमारे प्यारे बहनों के द्वारा, तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं जो हमें एक मलयालम सॉन्ग गा के बताएंगे। आइए स्वागत करते हैं उनका तालियों के साथ।
सभी को अच्छा लगा? सभी को अच्छा लगा? मुझे आवाज क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है मैं अकेली यहाँ पे हूँ। कि सब लोग यहाँ पे है तो हाथ उठाओ। सभी को अच्छा लगा? हाँ, ओके। अभी जो हमारा प्रोग्राम का आगे का समय है, जो अदर भाग है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी को विनती करूंगी कि आप सभी लोग, जैसे हमारे जो दूसरे व्यक्ति है जो आएंगे हमें बताने के लिए, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप ध्यान से सुनना जो भी वो कहेंगे, ठीक है? और हमारे अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज होगा। अगर आप ध्यान से सुनोगे और मैंने आपको एक प्रश्न किया और आप अगर मुझे उस प्रश्न का जवाब दोगे, वो आपको प्राइज दिया जाएगा। मेरे साथ सब सहमति है? ठीक है। सो आइए इस समय मैं मिस्टर जेकब सर का तहे दिल से स्वागत करूंगी। जो उनकी कंपनी का नाम है मोंटी मेयर्स। बैंगलोर में एक आर्किटेक्ट है। वो अपने काम के साथ साथ चैरिटी और सेवा का कार्यों में भी गहरी रूप से जुड़े हैं। जरूरतमंद के लोगों की मदद करने वाले संस्थाओं के साथ वो लगातार काम करते हैं। हमने अब तक जितने भी इमारतें बनाई है उन सब के आर्किटेक्ट मिस्टर जेकब सर है। तो उनकी पूरी जिंदगी दया और सेवा क्रिसमस की सच्ची भावनाओं को दर्शाती है। तो आइए हम उनका स्वागत करें तालियों के साथ। ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರೋರಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಹಿಂದಿ? So Benny Baro, you also speak in Hindi because we need both translate. क्या मेरा आवाज पीछे तक आ रहा है? तो मैं बिना माइक के बोलूं, ठीक है? No, it's okay.
We will show. You Hindi is it? I have You understand Malayalam? Okay. So can you see this picture of a village where I visited? ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या हम सभी को ये चित्र दिख रहा है जहाँ पे पीछे हमने दर्शाया है? Uh, so this is a picture of a coal mine in Jharkhand where I visited. ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವು ಇದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಅವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. तो ये जो चित्र है ये झारखंड का है जहाँ पे सर ने जाकर विजिट किया था. Anyone from Jharkhand? ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇದ್ರು यहाँ से कोई झारखंड से है? कोई झारखंड से है? तीन लोग. ये जगह है मधुपुर. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಮಧುಪುರ್ ಅಂತೆ. So there are coal mines where people are under bonded labor. ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ Bonded labor എന്ന് പറഞ്ഞാല് they been paid some ഒരു കാശ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ അടിമകളാക്കി. ಓ ಇವರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಅಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. तो ये जो लोग हैं यहाँ पर बंधित लोग हैं जो बंधन में जुड़कर लेबर करते हैं. Can you see these two small boys who are visually impaired? They're blind. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बच्चे हैं जो मेंटली डिसेबल है. Not mentally. फिजिकली डिसेबल. They're blind. This is blind. वो देख नहीं सकते हैं और physically disabled. She was asking earlier. We both got, all of us got two eyes. ಇವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆಯಾ? मैं पहले पूछ रही थी कि हम सब देख सकते हैं ना? I don't have one eye. मेरे पास एक आँख नहीं है. Correct. ನನಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I'm not worried about it, but I know what is blindness today. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. मुझे उसका परवाह नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है अगर मेरा एक आँख से मुझे नहीं दिखता, लेकिन मुझे पता है कि दुनिया में कितना महत्वपूर्ण है जहाँ पे लोगों को नहीं दिखता है. This is one of our homes. There are 50 mentally and physically challenged orphans. ಈ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಶರೀರ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. तो ये जैसे हम चित्र देख रहे हैं यहाँ पे 50 से अधिक लोग हैं जो बच्चे हैं यहाँ पे जो मानसिक और शारीरिक रूप में सही नहीं है. Again, you can see so many blinds there. ನೋಡಿ ಪುನಃ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನೇಕ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. और हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो देख नहीं सकते. Again, same blind children. ಪುನಃ ನೋಡಿ ಅದೇ ತರ ಮಕ್ಕಳು. These are all disabled children in Mother Teresa's home. ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು. तो जैसे हम देख सकते हैं कि मदर टेरेसा के जो अंडर शेल्टर में यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप में सही नहीं है. They're all thrown in bus stands and railway stations. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು. ये सारे बच्चे जो देख रहे हैं वो सारे बच्चों को रोड पर जैसे रास्ते पर छोड़ दिया जाता है. This is in Africa. It says every day 10,000 people are dying of starvation. ನೋಡಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ 10,000 ಮಂದಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕೊರತೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 10,000 लोग अफ्रीका करके जो देश है जहाँ पर 10,000 लोग से लोग भूखे मर रहे हैं. हर दिन. They are hungry, starving. They are dying. वो मर रहे हैं. Can you see this brother who does not have a hand and limb, but he's trying to move with a bicycle? ನೋಡಿ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೈಯು ಕಾಲು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक मनुष्य है जिनका हाथ पैर नहीं है, जो नहीं चला सकते हैं. This boy is crawling on the road. ನೋಡಿ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. जैसे ये व्यक्ति जो है वो रोड पर ऐसे अपना हाथों का इस्तेमाल करके चलने की कोशिश कर रहे हैं. So this is our life. ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. We want hamburger. ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಗರ್. तो ये हमारा जीवन है. हमें चाहिए बर्गर जैसे ऐसे जो चित्र में दिखाया गया है. We are not happy with small burger but big burger. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬರ್ಗರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಗರ್ ಬೇಕು. This is a competition of eating chili. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡಬಹುದು. और ये एक कंपटीशन है जहाँ पे मिर्ची खा रहे हैं वो लोग. See, people have good food but they are still eating mirchi. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ लोगों के पास अच्छा खाना है तो भी वो मिर्ची खा रहे हैं. But this is the problem with Bangalore today. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. People are all smoking. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो बैंगलोर में खास करके ये समस्या है जहाँ पे हम अटक जाते हैं. So this is what happens if you have pan parak or cigarette. This will happen. ನೋಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಪರಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆಗುತ್ತೆ. जब हम ये चित्र को देख रहे हैं, अगर हम सिगरेट या फूक करते हैं उसकी वजह से ऐसे हो सकता है. I volunteer in a hospital called Kidwai Cancer Hospital. ನಾನು ಕಿದ್ವಾಯ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. मैं किडवाई कैंसर हॉस्पिटल में विजिट किया था एक बार. So this is what I see there. ನೋಡಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. और वहाँ मैंने ऐसे लोगों को देखा जो इस स्थिति में है. This is our normal lung. This is how when you smoke, your lung will be like that. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಗರೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಕಪ್ಪಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇರಬೇಕು. तो हमारे जो फेफड़े होते हैं वो अगर हम अच्छा खाएंगे, अगर हम ना फूकेंगे नहीं तो हमारे जो फेफड़े हैं वो अच्छे दिखेंगे, या फिर अगर हम फूकेंगे तो हमारा वो डार्क लंग्स. ओ यस. Okay, next one. So cigarette is a Satan. It's a devil. ನೋಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸೈತಾನ್ ತರ. तो जो सिगरेट है जो हम अगर लेते होंगे तो वो शैतान का रूप है. So if anybody takes cigarette or pan parak, there's a remedy. There's something called Nicotex available. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇದೇ ತರ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ನಿಕೋಟೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು Medicine and ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರ ಇದೆ. अगर हम में से यहाँ कोई है जो इसका सेवन करता है तो यहाँ पर एक रेमेडी है जो हम यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं निकोटेक्स. This is available in the medical store. ये मेडिकल स्टोर में अवेलेबल ಇದು है. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. Next one. This is what happens if you give the mobile phone to children. ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. They'll get brain tumor and many such problems. और ये समस्या हो सकती है अगर हम बच्चों को फोन का इस्तेमाल करने देंगे तो. So try to give a earphone for them. ಇವರಿಗೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको एक ईयरफोन दे सके ताकि वो फोन ऐसा ना यूज करें. What happened to our brother? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस मनुष्य के साथ क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं वो. He is enjoying and already fallen down. ನೋಡಿ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಕುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So this is our वो व्यक्ति ने बहुत मजा किया और अभी वो ऐसा है पड़ा है वहाँ पे. So this is our party in Bangalore. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. Can we take these drinks? ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯೋರ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? क्या हम ऐसे ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं? We cannot. हम नहीं कर सकते हैं. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕುಡಿಬಾರದು. Because we have God in us. ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿದೆ. क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है. We don't have to look for God in a temple, church or mosque. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. हमें यीशु मसीह को मंदिर, मस्जिद या चर्च में खोजना नहीं है क्योंकि वो हमारे हृदय में रहते हैं.
So this is very important. Our body is a temple of God. ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है. We go and fight with our people at home after drinking. ನಾವು ನೋಡಿ ಇದು ಕುಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ ಹತ್ರ ಜಗಳವಾಡ್ತೀವಿ. अगर हम पीते हैं तो हम घर जाके ऐसा झगड़ा करते हैं. We can see all these buildings. I think Benny and me would have built so many buildings. ನೋಡಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು. तो हम ये जो इमारतें देख रहे हैं वो सर और बेनी सर दोनों ने साथ में मिलके बनाया है. All of you have helped us in building that. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. आप सभी लोगों ने मदद किया है उसे बनाने में. But what happens when if an earthquake comes? ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭೂಕಂಪನ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ, और अगर भूकंप आता है तो सब गिर जाएगा. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. सब गिर जाएगा. So we should not waste our time on unwanted things, but what is the requirement? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು. तो हमें हमारा उपयोग गलत चीज में नहीं करना है, लेकिन वो चीज में करना है जहाँ पे जरूरत है. Many places husband and wife fighting for money and other problems, divorces. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಅವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. बहुत सी जगहों पर हम जैसे चित्र में देख रहे हैं कि पति और पत्नी पैसे के लिए झगड़ रहे हैं. Who are the sufferers? Little children are the sufferers. ಯಾರು ನೋಡಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತದ್ದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. और कौन समस्या में है? बच्चे. This is our life. We are like a couple. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ತರನೇ. और ये हमारा जीवन है एक मेंढक जैसा. We sometimes think we are the greatest people. ಅನೇಕ ವರ್ತಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾವೇ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. और कभी कभार हम समझते हैं कि हम बहुत महान लोग हैं. We think we know everything. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, सब कुछ पता है. Can I call Bangalore city a garbage city? ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಿಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀಬಹುದಾ? क्या मैं बैंगलोर सिटी को एक गार्बेज का शहर बुला सकता हूँ, कचरे का शहर? Bible says if your hope in Christ is only for this life, we are worse off than anyone else. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಗಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ. तो परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि अगर हमारा आशा परमेश्वर में या इन क्राइस्ट अभी सिर्फ अभी के लिए ही सही है तो वो सबसे ही गलत है. So I always say God is our father, earth is our mother. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು, ಭೂಮಿಯು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर जो है, जो पिता है वो हेवन है, एंड जो अर्थ है वो हमारी माता है. जो So there is only one earth, we should not pollute it. ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. तो यही जो धरती है जिसे हमें गंदा नहीं करना है. So this is what I said, we are a kappe in a well. ನಾವು ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಪ್ಪೆ ತರ तो ಇರ್ತೇವೆ. मैंने यही कहा कि हम एक मेंढक है वो कुएं में. But our limited knowledge, our brain is so small, our limited knowledge we have. ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು. लेकिन हमारा दिमाग जो है वो बहुत छोटा है. But we should understand that when you say namaste, we should hold it like this. ನಾವು ನಮಸ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. तो जब हम नमस्ते बोलते हैं हम ऐसे हाथ को जोड़ते हैं. It means I have God in me, I should see God in me and you. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. तो इसका अर्थ ये है कि मेरे में खुदा है और मैं वही खुदा तुम में भी देख रहा हूँ. So we don't have to look for God anywhere else. If there is God in us and you. ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು. तो हमें खुदा को किधर नहीं खोजना है क्योंकि खुदा खुद हमारे अंदर है. So we will be very careful how we live. ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. You know, people
तो हमें बहुत ध्यान से हमारा जीवन को जीना है. So we people go and build big churches in Bangalore. ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. तो हम बड़े बड़े चर्चों को बनाते हैं, इमारतें बड़े बड़े बनाते हैं. I always tell, don't build any more churches in Bangalore. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बड़ी बड़ी इमारतें वाले चर्च हमें नहीं बनाने चाहिए. I have a full-time ambulance in the city to pick up people from the roadside. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಕರೆದು. और मेरे पास एक एम्बुलेंस है जहाँ पर मैं वो एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता हूँ लोगों को उठाने में जो रास्ते पर है. If you find anybody abandoned on the roadside, please call Benny or me. We will pick them up. ಯಾರಾದರೂ ಆತರ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂದ ಬಿದ್ದಿರುವಂತವ್ರಂತರ ಯಾರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀರಿ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀವಿ. अगर आप रास्ते से जा रहे हो और अगर आप अपने रास्ते पर किसी बेगर को देखा या किसी को देखा जो गंदी स्थिति में है, प्लीज आप बेनी सर और या फिर जेकब सर को रीच आउट करना. We need more buildings to accommodate them, not churches, temples and mosques. ನಾವು ಚರ್ಚ್ಗಳು ಮೋಸ್ಕ್ಗಳು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬಡವರಿಗೂ. ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. We need buildings for poor and needy, not churches, temples. तो हमें ज्यादा जरूरत है जो गरीब है, जिन्हें ज्यादा जरूरत है, उन लोगों के लिए हमें इमारत खड़ा करना है, ना कि चर्च के लिए. As I said earlier, God is in our heart. ನೋಡಿ, ಇದೇ ತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. और जैसे मैंने कहा पहले कि यीशु मसीह हमारे हृदय में है. Bible says one day the sun will go dark and everything will be dark. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತೆ. और पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि जो सूरज है वो अंधेरा हो जाएगा और ये पूरा जो पृथ्वी है वो जल जाएगा. So this is what we try to do, we try to carry everything to heaven. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನಾವು ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ. और हम क्या करते हैं, हम सारा चीज जो हमारे साथ है, हमारा धन दौलत सारा चीज हम एक साथ उसे उठा के स्वर्ग में लेके जाने की कोशिश करते हैं. One thing we should realize is after we die, nobody will remember us. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. एक चीज हमें जानना है कि हम जब मर जाएंगे किसी को हमें हमारा याद नहीं रहेगा. So our life is important when we are alive, do it well. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋಣ. तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम जिंदा है हमें वो सही रीति से हमारा जीवन को जीना है. That is why I said that if an earthquake comes, everything will crash down. My body is mud will go to mud. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಭೂಕಂಪನ ಏನಾದರೂ ನಡೆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಶರೀರವು ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. तो अगर भूकंप आएगा वो सारी चीज बर्बाद हो जाएगी और हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का है, वो मिट्टी में ही जाएगा. And if you look at earth is standing where? It is standing in the thin air. It is in the void. ನೋಡಿ, Nothing. ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದೆ? ಭೂಮಿಯು ಒಂದು ವಾಯುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ. अगर हम पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी एक खुली हवा में है जो ऐसे ही वहाँ पे बना हुआ है. We build foundation. Why the earth does not have a foundation? ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂಬುದು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. हम लोग एक मार्ग बनाते हैं, एक बेस बनाते हैं जहाँ पे हम बिल्डिंग बना कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी ही खुले आसमान में ऐसा है. Why it is not falling off? Because Jesus is holding it. Jesus is controlling it. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वो गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि यीशु मसीह उसे पकड़ा है. Bible says our God does not slumber or sleep. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. हमारा बाइबल पवित्र शास्त्र ऐसे कहता है कि हमारा यीशु मसीह सोता नहीं है. So the greatest message of Bible is love. ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. तो पवित्र शास्त्र का सबसे महत्व विषय ये है कि प्रेम, प्यार. Jesus, I loved you, so you should love others also. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ಎಂಬುದು. यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुमसे प्यार किया तो तुम दूसरों से प्यार करो. I don't know how many of you know about Mother Teresa, saint of Calcutta. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರು ಕಲ್ಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬರು ದೇವರ ಸೇವಕಿಯರು. मैं नहीं जानता कितने लोग हम में से मदर टेरेसा को जानते हैं.
I've gone and stayed with her for a week. ನಾನು ಅವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಅವರಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೆ. मैं वहां पर जाके उनके साथ रुका था 1 हफ्ते के लिए. That was a great inspiration for me. ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. वो मेरे लिए बहुत ही खास दिन था. If you see, these two brothers are blind, they're visually impaired. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇಬ್ಬರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. और जैसे हम देखते हैं कि ये जो 2 भाई हैं वो देख नहीं सकते हैं. One day I met them on the road. I asked them, do you see? ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿ. और एक दिन मैं उन्हें रास्ते पर मिला और मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या आप देख सकते हो? They said they cannot see. I took them to a doctor. Doctor said nothing can be done. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. उन्होंने कहा कि हमें नहीं दिखता है, तो सर ने उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने उन्हें ये कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते. These two were not believers of God. ಇವರು ಇಬ್ರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ये 2 जो भाई हैं वो विश्वासी नहीं थे. But I told them, you can get 2 beautiful eyes. If you believe in Jesus, then you can go to heaven. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಸುಂದರವಾದಂತ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. तो मैंने उनसे कहा कि आपको आपके 2 सुंदर आंखें मिलेगी अगर परमेश्वर पे आप विश्वास करोगे तो. He wanted to know more about Jesus. Then he went and stayed in Benny's house for 3 days. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಬಂದು 3 ದಿವಸ ಅವರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. तो वो लोग दोनों भाई सहमत हुए और वो बेनी सर के यहाँ पे 3 दिन उनके घर पे रुके. So now they are believers of Jesus because they know they don't have eyes here, but they're going to get 2 beautiful eyes when they go to heaven. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇವಾಗ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂತ ಆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 2 ಕಣ್ಣು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಇವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. भले ही उन्हें आंखें नहीं थी, लेकिन जैसे सर ने उनसे कहा कि अगर आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानोगे और परमेश्वर पे विश्वास करोगे, आप स्वर्ग में 2 आंखें, आपके सुंदर आंखें आपको मिलेगी. So belief in Jesus is not a religion. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದು ಒಂದು ಮತವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. तो परमेश्वर पे विश्वास करना और बिलीव करना एक धर्म नहीं है. Because Jesus, there's only one God. That God doesn't have any religion. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. खुदा एक ही खुदा है और उसका कोई धर्म नहीं है. Jesus is the son of the only God. That God's religion is love. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಧರ್ಮವು. तो यीशु मसीह एक ही खुदा है जिनका मेजर और महत्व चीज जो है वो है प्रेम. What is he doing now? वो क्या कर रहे हैं अभी? He is knocking your door, your heart. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಂಬ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो वो आपके दरवाजे को खटखटा रहे हैं, आपके हृदय को खटखटा रहे हैं. Are we ready to open our heart for Jesus? ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. क्या हम तैयार हैं अपने हृदय को खोलने के लिए यीशु मसीह के लिए? He doesn't want your religion, but he wants your heart and your sins. ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. उन्हें आपका धर्म नहीं चाहिए, पर सिर्फ आपका पाप जो आपने किया है वो उसके मिटाने के लिए रहे. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು, ಆ ಪಾಪವನ್ನು ದೇವರು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. If you ask him for forgiveness, he will hold you and take you up. ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಈ ಪಾಪ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. अगर आपने कितना भी पाप किया है, अगर आप परमेश्वर को अपना एकलौता मानते हो, तो वो अपने हाथों को भी देने के लिए रेडी है और आपको उठाने के लिए उस पाप में से. He will hug you and forgive you. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ. वो आपको गले लगाएगा और आपको क्षमा भी करेगा. That is why he died on the cross for all of us. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. इसीलिए वो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मरे. You don't have to worry about any problem, but just trust him and give all the sins and ask him for forgiveness. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಸರದಲ್ಲಿರುವುದು ಬೇಡ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬೋಣ. ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳೋಣ, ಆತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬೋಣ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. तो हमें कोई भी चीज की चिंता नहीं करना है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर की ओर दे दो, वो बाकी सारी चीजों को ख्याल रखेगा.
John 3:16 says, God gave his only begotten Son that whoever believes in him will have eternal life. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬನ ನಾಶವಾಗದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ. So यूहन्ना 3:16 ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दिया इस संसार के लिए. Irrespective of religion. ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. धर्म के बारे में सोचकर नहीं. One day we all have to die, but let's walk on the cross so that we can reach heaven. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. एक दिन हम सबको मरना है, तो क्यों ना हम इस समय ये जो क्रूस का वे दिख रहा है, मार्ग दिख रहा है, उसे पकड़ कर चले. That is why he died on the cross for the whole world, to take the sins of the world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಪಾಪಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಯಜ್ಞಾರ್ಪಿತನಾದನು, ಒಂದು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. इसीलिए वो क्रूस पे मरे ताकि हमारे सारे पापों को क्षमा मिल सके. So the Bible says there is a narrow way which goes to heaven and a wide way which goes to hell. ನೋಡಿ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೋದರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರ್ಗವಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. तो जैसे हम ये चित्र में देखते हैं, एक सीधा मार्ग है जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा, और एक पिछला मार्ग है जो हमें दुनिया की ओर ले जाएगा. If you enjoy all the goodness of the life with all bad habits, you will be selecting the wide and happy road, but we end up in hell. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಳುಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಯಸಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. तो अगर हम हमारा जीवन ऐसे ही मजे करने में लुटा देंगे तो हम नर्क में जा सकते हैं. So let's not go. None of us should go to hell. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರು ನಾವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. हम में से कोई लोग नर्क में नहीं जाना चाहिए. So our life changing transformation is required today. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. तो हमारा जीवन का सारा क्षण हमारे हाथ में है. Whoever you are, wherever you are, whatever you have done. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದರು, ನೀವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, आपने कुछ भी किया, कोई भी हो, आपने कोई भी पाप किया है, Just kneel down and ask Jesus for forgiveness. ನೀವು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಬೇಡಿರಿ. सिर्फ घुटने पर आओ और परमेश्वर से क्षमा मांगो. So that's why I said the word of God is a medicine. That if you take a Bible, I'll give you all a gift of Bible. Please read it, understand it. That can save you. That can help you. ನೋಡಿ, ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಮದ್ದಿನೋಪಾದಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಿರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए एक मेडिसिन है, हमारे लिए एक दवाई है. तो जैसे हम आपको बाइबल भी देंगे, पवित्र शास्त्र देंगे, उसे आप पढ़कर आप अपने पापों को क्षमा मांगे. Bible says salvation for everyone. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि सैल्वेशन जो है, उद्धार, वो सबके लिए है. No religion, nothing is barring us, nothing is stopping us. ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. हमें कोई चीज रोक नहीं रही है, ना कोई धर्म, ना कुछ भी. I was telling in many Christmas programs, Christmas is not a time for celebration, but is a time to prepare for Jesus' second coming. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. मैं सभी से यही कहता हूँ कि क्रिसमस एक उत्सव ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दूसरा आने का समय है. When Jesus comes back, he will destroy the earth and he will make a new earth. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇರುವಂತಹ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆತನ ಹೊಸ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, तो परमेश्वर जब आएंगे वो ये जो धरती है उसे नाश कर दूसरा नया धरती बनाएंगे. In that new earth, all those who are asked for forgiveness of sins will be given a chance. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. जो नया धरती बनेगा उसमें आज हम जितने लोग क्षमा मांगेंगे उन लोगों के लिए वो जगह रहेगा. The saddest time of my life was when I visited a red light area in Calcutta. ನಾನು ಕಲ್ಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. सबसे उदास बात मेरे लिए ये था कि जब मैं कलकत्ता में एक बार रेड लाइट एरिया में गया था.
There I went through Mother Teresa's home. I could see little girls are lined up for prostitution. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. तो मैं मदर तेरेसा के यहाँ पे से मैंने देखा कि जो छोटे बच्चे हैं वहाँ पर वो व्यवसाय के रूप में उनको लिया गया था वहाँ पे. That is the saddest day in my life. I knelt there and I said, Lord, destroy the earth. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಮೊಣಕಾಲು ದೇವರಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. और मुझे इतना बुरा लगा कि मैं अपने घुटनों पर आके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि पिता इस जगह को आप नाश कर दो. I don't know how to start, where to start, how to rescue them. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. मुझे नहीं पता था मैं कैसे शुरुआत करूं इस चीजों को बंद करने के लिए. I know one Pastor Shine who is a burden for the same problem. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಶೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾರದಲ್ಲಿರುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास्टर शाइन जो है उनका भी बोझ यही है. A lot of children who are abused in India. ಈ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ತುಂಬಾ ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ತನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ पे व्यवसाय में व्यवचार में बंधे हुए हैं. In Kidwai Cancer Hospital there are 500 children without medicines today. ನೋಡಿ, ಕಿದ್ವಾಯ್ ಎಂಬಂತಹ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ 500 ಮಕ್ಕಳಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಗದೆ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो किदवाई करके जगह पर यहाँ पे 500 से अधिक लोग हैं जिन्हें दवाई की क्षमता है. There are children in Indira Gandhi Hospital wanting blood every day. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ತವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. तो इंदिरा गांधी जो अस्पताल है उसमें बहुत से लोग हैं जिनको खून की कमी है और उन्हें खून की जरूरत है. Yesterday when I went there, the doctor was crying. They said, why are you celebrating Christmas? Why don't you come and give blood here? That is Christmas. ನಾನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. तो कल मैं जैसे डॉक्टर से मिला और डॉक्टर मुझे ये कह रहे थे कि हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं. हम यहाँ पे काफी लोग हैं जिन्हें काफी चीजों की जरूरत है, जो मौत से लड़ रहे हैं, आके यहाँ पे खून दान करो. I think we should plan in Benny's work site, we should have blood donation camp. ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तो हम ये योजना कर रहे हैं कि जो साइट्स पे हम जहाँ पे है वहाँ पर हम ब्लड डोनेशन की योजना कर सकते हैं. We can have many such programs in the site to bring help other people who are in suffering. ನಾವು ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಾಗುವವರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. तो हम ऐसे कर सकते हैं जहाँ पर हम हमारे साइट में अनेक प्रोग्राम का योजना कर सकते हैं जहाँ पे हम अच्छी चीजों को दे सके. Yesterday we went to the railway station early morning. I could see at least 200 children sleeping on the footpath there with newspaper covered. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ 200 ಮಕ್ಕಳಷ್ಟು ಅವರು ಆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. तो कल जैसे मैं रेलवे स्टेशन पर था, मैंने 200 से अधिक बच्चों को एक न्यूज़पेपर पे सोते हुए देखा. It says in India many children are malnourished. They don't get right food. ಈ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದಂತ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. तो हम देखते हैं कि भारत में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको सही खाना नहीं मिलता है, सही भोजन नहीं मिलता है, जिनके कारण उनका शरीर जो है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है. If you any schools nearby your place, you call me. Where government schools, we can give them protein bars to remove their malnourishment problem. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ನೀವಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಾಧಿತರಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. अगर हम में से यहाँ पे लोग जितने बैठे हैं, अगर हम किसी स्कूल या कोई पाठशाला जहाँ पे स्कूल में ऐसे बच्चे हैं, अगर आप देखते हो तो प्लीज हमारे पास आइए, हम उन्हें प्रोटीन बार देंगे ताकि उनका जो शरीर है वो सही रीति से काम करे. So let's celebrate the right Christmas this time. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ. तो आइए इस समय हम सही क्रिसमस का मतलब को मनाएंगे. Let's ask Jesus to come into our heart and be children of God. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರೆಯೋಣ, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೋಣ. तो इस समय हम बोलेंगे कि पिता हमारे हृदय में आए और हमारे हृदय में कार्य कीजिए. We can meet at
least one person every day and say hello to him and give me a hug. ಒಂದು ದಿವಸ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಹಲೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. हम हर दिन में एक इंसान से मिल सकते हैं, हम उन्हें गले लगा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वो कैसे हैं. I visited Niman's hospital 3 days back. ನಾನು 3 ದಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಹೋದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. मैं 3 दिन पहले निम्हांस हॉस्पिटल में गया था. There are so many people who are mentally ill. They need your hug. They need your love. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಂದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂತವರಿದ್ದಾರೆ. वहाँ पे कई लोग हैं जो मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, तो उनको एक गले लगाने की जरूरत है. They don't need your money. They don't need anything from you, but they need your love, a hug, and smile from us. ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಎಂತದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆದರಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೀವು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. उन्हें आपका पैसा ना आपका कुछ चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हें आपका प्रेम और उन्हें आपका एक गले लगाने का चाहिए. If you don't do that, the Christmas is a waste of time. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. तो ये मत सोचिए कि क्रिसमस जो प्रोग्राम है वो कुछ खास नहीं है. Someone asked me on Christmas Day, what am I going to do? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. तो किसी ने मुझसे पूछा कि क्रिसमस में आप क्या करोगे? I said 5 days during Christmas I visit 5 jails. 5 ದಿವಸ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ಅಂದ್ರೆ ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಂದರ್ಶಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. तो मैंने उनसे कहा कि 5 दिन जो क्रिसमस का है वो 5 दिनों में मैं जेलों में जाकर वहाँ पर पहुँचूंगा. If you see, there are so many people in the jail. They've been convicted. They've been in the jail for wrong reasons. ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. जैसे हम देखते हैं कि जेल जहाँ पे लोग वो ऐसे लोग हैं जहाँ पे उन्होंने पाप किया है, गुनाह किया है, हर एक चीजें की है. They need people like us to go there and be with them during this time. ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. और ये बहुत अच्छा होगा कि अगर हम जैसे लोग वहाँ पर जाके उनके बीच में हो सके तो. So let's enjoy more of Christmas with songs and good food and celebration. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸೋಣ. Thank you. ವಂದನೆಗಳು. तो आइए इस क्रिसमस को हम पूरे हृदय के साथ बनाएंगे. क्या हम जोर से ताली बजा सकते हैं? कितने लोगों को समझा कि ये कितना महत्वपूर्ण था? क्या मैं हाथ दे सकती हूँ आपका? बस 5 जन. वो पीछे से मुझे सिर्फ 5 दिख रहे जिनको मैंने समझाया. आई थिंक सिर्फ इतने लोग को समझा. आई थिंक सर यू विल हैव टू सी. कितने लोगों को समझा कि हम हाथ उठा सकते हैं? उन्होंने इतना मेहनत करके आप लोगों को समझाया. वो देख रहे हैं आपको. क्या बात है, अभी सबने हाथ उठाया. अभी खुद के लिए ताली बजाइए. भैया सब लोग हाथ उठा के ऐसे स्माइल करो, वो आपका एक चित्र लेंगे. तो ये समय है जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे और मैं बुलाना चाहूँगी कुछ मेरे दोस्तों को जो ऊपर आएंगे और हम कुछ क्रिसमस गीत गाएंगे. और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस समय हम खड़े हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा बैठ लिया ना तो थोड़ा पैर दुख रहा होगा. खड़े होते हैं, हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे. सभी लोग खड़े हो जाइए. थोड़ा ऐसा इधर मूव करो, इस तरफ मूव करो. वेरी नाइस. मैं बहुत कम लोगों को देख रही हूँ करते हो. आप लोग सबसे स्ट्रॉन्ग लोग हो. ऐसा इधर इतना हैवी चीजें उठाते हो आप लोग. थोड़ा मूव करो. आपके आए दाएं बाएं सब जगह मूव करो, ऊपर नीचे. कैसा लग रहा है सबको? अभी अच्छा लग रहा है? ओके. अभी हम खड़े रहेंगे और हम हमारे हाथों का एक्चुअल इस्तेमाल करेंगे अभी कुछ गीतों के द्वारा. Beyond the stage.
तो जैसे हम गीतों को गाएंगे, मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके टाइम को जाएंगे और हम नाच भी सकते हैं। हमें हम नाच भी सकते हैं, हम गा सकते हैं। अगर आपको ये गाने बहुत इजी गाने हैं, हिंदी है, हम सबको आएगा, ठीक है? जब मैं ना 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 बोलूंगी, आपको क्या करना है? हे, क्या बोलना है? I'm sure इतने सारे लोग हैं, आवाज जोर का आएगा। हे, क्या बोलना है? ओके, एक बार ट्राई करते हैं। ना 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 ना, हे, ना 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 ना, 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 हे, ना 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 ना, हे, ना 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 ना, ना 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 ना, नाचूंगा गाऊंगा फूलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा फूलों के समान, नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान। मैं गाऊंगा मेरा राजा है महान। मैं नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान। मैं गाऊंगा मेरा राजा है।
सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा, लेकिन हम अभी गाएंगे, पर हम साथ में मिलकर गाएंगे इस गाने को। बहुत बहुत ही साधारण गाना है, आई एम श्योर कि हम सबको आएगा वो। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, कि आज पैदा, कि आज पैदा, कि आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। रात में भेड़ों को चराते थे, रात में भेड़ों को चराते थे, दूध संदेश में दे गया, दूध संदेश में दे गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। ये सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया। हम सभी लोग एक साथ मिलकर आप सभी को एडवांस में क्रिसमस का संदेश देना चाहते हैं, तो हम ये गीत गाएंगे, मैरी क्रिसमस। आप ताली बजा सकते हैं इसमें। Feliz Navidad,
आप बजा सकते हैं, हम बैठ सकते हैं। तो हम प्रोग्राम के अंत की ओर है और मैं बुलाना चाहूँगी पास्टर शाइन को, जो सिटी हार्वेस्ट एजी चर्च के पास्टर है। आइए हम उनका स्वागत करते हैं जोर से। Good evening. It's such a joy for us to come and be with every one of you this evening. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला यहाँ पर मैं जमा हूँ यहाँ पे आप सभी को देखकर। I want to thank God for this time that God has given us with Jacob sir and brother Benny and dear pastors and every one of you. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया और ये समय दिया जहाँ पे मैं जेकब सर, ब्रदर बेनी और सभी पास्टर जो यहाँ पे मौजूद है How many of you are enjoying this evening time? कितने लोग यहाँ पर ये समय को खुशी मना रहे हैं? Okay, I will not prolong. I will very quickly. We want to bless you and pray for you. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ही जल्द मैं आपके लिए आपको आशीषित करना चाहता हूँ और आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। What is Christmas? क्रिसमस क्या है? Christmas is when God came to our world. क्रिसमस वो है जहाँ पे परमेश्वर इस धरती पर इस दुनिया में आए। He put on flesh. वो मनुष्य का रूप धारण किया। Like you and I, he humbled himself and lived in this earth. हमारे जैसे आप और मेरे जैसे लोग के जैसे वो यहाँ पर दुनिया में आए और मनुष्य के रूप में यहाँ पर। You know, Jesus was not wearing suit and pant and shirt like all of us. तुम्हें पता है कि यीशु मसीह हमारे जैसा सूट पैंट ये सब नहीं पहने थे। What was Jesus' job? परमेश्वर का काम क्या था? He was in the construction job. ये परमेश्वर एक कंस्ट्रक्शन जॉब में थे, He was कार्य में थे। a carpenter. वो एक कारपेंटर थे। You know, you are all in the blessed construction job, and we respect you for that. और आप सभी लोग एक बहुत ही आशीषित कंस्ट्रक्शन कंपनी में हो और हम बहुत खुश है उसलिए। You are building our homes in the city. आप लोग हमारी इमारतों को बना रहे हो You are इस शहर building में। our churches. You are building our schools in the city, and we appreciate you. Without you, the city cannot be the way the city is, because you are building the city. और जैसे हम देखते हैं इमारतें वगैरह जो स्कूल है, चर्चेज है, आप लोग उसे बना रहे हो। अगर आप लोग नहीं बनाओगे और आप लोग नहीं रहोगे तो हमारे लिए शहर बहुत खाली होगा। So we value your work. तो हम आपके काम को सम्मान करते हैं And we love you. और हम आपसे प्रेम करते हैं। Jesus, who came on the day of Christmas, for some years, he also worked as a carpenter. और यीशु मसीह जैसे वो इस धरती पर भी आए, वो यहाँ पर एक कारपेंटर के रूप में काम किए। You know, when you work with your hands are very tough and rough, isn't it? जब आप काम करते हो आपका जो हाथ है वो बहुत कड़क हो जाता है, राइट? Jesus was like that. यीशु मसीह वैसे ही थे। You know, he came, he limited himself to be a human, but God, and he worked with his hands and helped his father's business. तो वो यहाँ पर आके वही वैसे इसी रूप में रहे और उन्होंने अपने पिता को उनके कार्यक्रम में, उनके बिजनेस में उनका हेल्प किया। So he knows your struggles. तो वो आपकी सारी चिंताओं और आपके दुख को जानता The है। Bible says, coming of Christmas is God to be living with us. और क्रिसमस का मतलब ये है कि यीशु मसीह आए और हमारे साथ रहे। We know that Jesus lived and he was buried. He died on the cross and he was buried. और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह आए, वो क्रूसित हुए और उन्हें दफनाया गया। And then the Bible says that he went to heaven to be with his father. और पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि वो जी उठे और वो स्वर्ग में अपने पिता के साथ But before he went, पर वो उनके जाने से पहले he said, I am going to be with you उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा by my spirit. मेरी आत्मा के द्वारा। So when you close your eyes and pray to Jesus by his spirit, he is with us. जब हम अपने आंखों को बंद करते हैं और आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, वो हमारे बीच में है And he will bless you. और वो आपको आशीषित करेंगे। Greatest gift that he gives us is to be good human beings and the gift of eternal life. और सबसे अच्छा तोहफा जो वो हमें देते हैं वो है एक अच्छा जीवन जीने का। No, you all are earning as good workers in the city. और आप लोग एक अच्छे काम कर रहे हो इस दुनिया में। But every week when you get your salary, पर हर हफ्ते जैसे आपको आपका सैलरी मिलता है, तनख्वाह, where does the money go? वो पैसा कहाँ जाता है? Does it go in alcohol क्या वो पीने में जाता है or does it go in cigarettes?
क्या वो सिगरेट फूकने में जाता है, or does it go in some pan parag? क्या वो कुछ पान या ऐसे क्षमता में जाता Can you है? imagine? These are all the evil of this world. क्या आप सोच सकते हो कि ये सारी चीजें जो है वो इस चीज का डेविलिश हरकत है, We जो feel शैतानी that we चीज है। can work hard and to get out of the tiredness, we can have some drink. अगर आप ऐसे सोचते हो कि हम इतना इतना मेहनत करते हैं, इतना दुख के साथ उठाते हैं, और क्या हम ये जो पैसे जो हम कमा रहे हैं वो हम इसमें डालेंगे, No, so that we can get out of tiredness. ताकि हम अगर हम हमारे थक गए हैं पूरा दिन काम करके, तो हम अल्कोहल जैसे दारू है उसका क्षमता सेवन करके हमारा दुख और टायर्डनेस But do निकालेंगे। you know that all this are very destructive to us? क्या हम जानते हैं कि ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत स्वरूपित रीति में हो जाती है, No, and it destroys our families. और ये हमारी जो परिवार है उसको नाश करती है। No, so Jesus can deliver us from all this तो यीशु मसीह हमें ये सारी चीजों से छुटकारा दे सकता and है give us a good life. और हमें एक अच्छा जीवन दे सकता है। Can you imagine how much you will save if somebody can come out of such addictions in life? क्या आप सोच सकते हो कि आप लोग कितना बचत कर सकते हो अगर आप ये सारी चीजों में नहीं पड़ोगे And तो, how better life you can give to your children? और कितना अच्छा जीवन आप अपने बच्चों को दे सकते हो, And Jesus can help you do that. और यीशु मसीह आपको मदद कर सकता है ये करने में। And I want to pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करना Jacob चाहूंगा। sir has spoken from the Bible, जेकब सर ने जैसे पवित्र शास्त्र में से बताया but है, I'm going to pray for you right now लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा that this Christmas is going to be a blessing for you. कि ये क्रिसमस है जो वो आपके लिए आशीष का कारण Jesus हो। just does not come and go. He's always with us. यीशु मसीह बस आके नहीं जाते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। You know, and whenever Jesus' birth was announced, they said, "Don't be afraid." जब भी यीशु मसीह का जन्म बताया गया था, उसमें कहा था कि डरो ना मत, Don't be afraid. डरो मत। No, turn to the person sitting next to you and say, "Don't be afraid." आपके बाजू में जो बैठा है उनको कहो कि डरो मत। Don't be afraid. Why? डरो Because मत। Jesus lives and He is with us. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जीते हैं और वो हमारे साथ जीते हैं। Amen. Amen। So I want to pray with you this evening. तो मैं आपके साथ प्रार्थना करना This Jesus who चाहता हूँ। came down is willing to come into our lives ये यीशु मसीह जो नीचे धरती पर आए, वो हमारे जीवनों में आना चाहते हैं and willing to bless us. और हमें आशीषित करना चाहते हैं, And He's willing to give us good lives so that we can become good human beings. और वो इच्छा करते हैं कि वो हमें एक अच्छा जीवन दे ताकि हम एक अच्छा रूप में मनुष्य बन We can सके, have good family relationships. हम अच्छा परिवार के साथ अपना संबंध रख And सकते Jesus हैं। also gives us life even after death. और यीशु मसीह हमें जीवन देते हैं मृत्यु के बाद भी। That's the eternal life that He promises us. वो अनंत काल का जीवन है जो उसने हमसे वाचा I की think है। Jacob sir is providing Bible to every one of you. और जैसे जेकब सर सभी के लिए पवित्र शास्त्र देने वाले हैं। You want to listen to Jesus? क्या आप यीशु मसीह को सुनना चाहते हो? How many of you want to listen to Jesus? कितने लोगों को यीशु मसीह से सुनना चाहते हो? Okay. Only one way to listen to Jesus is read that Bible. That is how Jesus speaks to us. तो एक ही चीज से आप परमेश्वर को सुन पाओगे अगर आप वो पवित्र शास्त्र को पढ़ोगे। Okay. So I hope you got my message. और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वचन And I समझ want में to आया। pray for your family. और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके परिवार के लिए I want प्रार्थना to करूँ। pray for your health. मैं आपके शरीर और शारीरिक के लिए प्रार्थना We करना want to चाहता pray हूँ। for overcoming every addictions of your life, whatever it is. अगर आप किसी बंधन में जुड़े हो एडिक्शन के, उसके लिए मैं प्रार्थना करना So चाहता if you हूँ। want prayer and blessings, can you please stand? अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है और आशीष की जरूरत है, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप आपके जगहों पर खड़े हो जाए। Repeat this prayer after us. ये प्रार्थना हमारे पीछे दोहराए। Now we close our eyes so that we can concentrate on the prayer. हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम ध्यान देंगे प्रार्थना में। So can we close our eyes क्या हम अपने आंखों को बंद कर so सकते that we are हैं not distracted? ताकि हम यहाँ वहाँ खोए ना? And pray this prayer in Hindi after sister. और जैसे मैं हिंदी में अनुवाद करूंगी, मेरे बाद आप ये दोहराए। Loudly you pray from your heart. जोर से प्रार्थना करें आपके हृदय के लिए। Lord Jesus, यीशु मसीह, आप दोहराए मेरे पीछे। यीशु मसीह, thank you for coming into this world. धन्यवाद कि आप इस दुनिया में आए। जोर से बताइए ना। जोर से बोलिए, धन्यवाद कि आप इस दुनिया में आए।
and thank you for loving me. और धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के लिए। मेरे पीछे दोहराए। I love you, Lord. मैं आपसे प्रेम करता हूँ पिता। Come into my life. मेरे जीवन में आओ। Once again, come into my life मेरे जीवन में आओ and change me, Lord. और मुझे बदल दो पिता। Bless me, Lord. मुझे आशीषित करो पिता। Bless me, Lord. मुझे आशीषित करो। And Lord, help me come out of every sin or every addiction in my life. और पिता मेरे सारे पापों से मुझे निकालिए। Read that, say that again. वापस से कहिए, पिता मुझे मेरे सारे पापों से दूर निकालिए। कहिए मेरे पीछे, पिता मुझे मेरे सारे पापों से बाहर निकालिए। And make me a good human being. और मुझे एक अच्छा मनुष्य बनाइए। Bless my family. मेरे परिवार को आशीषित कीजिए। Give me good health. मुझे एक अच्छा शरीर And दीजिए enable me to live in the path of truth and light. और मुझे ऐसा बनाइए कि मैं सच्चाई के मार्ग में चल सकूं। Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमेन। आप बैठिए। So, you know, just like you talk to your friend, you can talk to Jesus. जैसे आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, वैसे ही आप यीशु मसीह से बात कर सकते Go हो। to your room and close your eyes and pray. आप आपके कमरे में जाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। When you have difficulties, you can go to God and pray, and He will answer you. जब अगर आप समस्या में कुछ बंधे हो तो आप परमेश्वर के पास जा सकते हो घुटने टेक कर, और वो आपको उत्तर देगा, He's a living God. क्योंकि वो जीवित खुदा है। So what a joy for us to have you and to talk to every one of you and to see you. तो ये बहुत ही खुशी का समय है कि हम आपको देख सके और आपसे बात कर सके। Wish you a blessed Christmas. आपको एक आशीषित क्रिसमस And बोलते God हैं। have give you wonderful future for His glory. आशा करता हूँ कि यीशु मसीह आपको एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस दे और आपका जीवन सही रीति से रहे। Thank you. धन्यवाद। थैंक यू पास्टर। अभी ये समय है जहाँ हम भोजन की ओर बढ़ेंगे, और भोजन के बाद आप घर में ही जाइए, आपके लिए कुछ है। सो हम वो खाने के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर जी थॉमस से कि वो आके खाने के लिए प्रार्थना करें। ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ಕೇಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿರುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಈ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು, ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ದೇವರೇ ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. आप सबसे विनती है कि आप एक लाइन यहाँ पे बनाएंगे। हम यहाँ से ये चीज़ लेकर भोजन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं विनती करूँगी कि आप सब खड़े हो जाइए और एक लाइन बनाइए। इस तरफ से बनाएंगे।
हम एक एक करके स्टेज पर आएंगे, नहीं वहाँ से ही हम करते हैं। Praise the Yeah. See, everyone is coming. Where are they going on stage? अब एक एक करके आ गया। क्या भाषा? कौन सा भाषा? हिंदी। कौन सा गाँव? Yeah, someone give that from there. Yeah. कौन सा भाषा? Yeah, മച്ചാനോട് അതൊന്ന് ഓഫ് Gavo Gavo Zum Zum Gavogi Zum Zum Gavogi कौन सा भाषा? कौन सा गाँव? कौन सा गाँव? Gavo Gavo Zum Zum Gavogi Zum Zum Gavogi Muktidata Jivandata Dilmayaya Kushiyalaya Dilmayaya Kushiyalaya Gavo कौन सा गाँव? कौन सा गाँव? हिंदी पढ़ेगा? क्या लिखा? हिंदी पढ़ेगा? क्या लिखा?
Come, this ladies. Just relate. Come, come. ಏನಾಗಿದೆ ಒಡಂಬಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಏನು ಏನಾಗಿದೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ಹೌದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಿ ಹೌದು ಕೊಡಿ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 5 ಜನರಿಗೆ All English. Hindi. Hindi. Bible segment. After Christmas time, Hindi na? Bible segment.
Sorry, come. Side cut it. Bible side. Bible side. प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तेरी न चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तेरे न चाहते हैं, तो प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की, पर कोई न भुला पाएगा गहराई तेरे प्यार में, पर कोई न भुला पाएगा गहराई तेरे प्यार की, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं, तेरे प्यार
करोगे हम तेरा तू प्यार का सागर सागर दया का